Hello children, welcome once again to English session through videos. Children, you know I had sent you poem of Gypsy. In that we have to complete the grammar. For that you must know direct and reported speech. Children, you know we can speak in two ways. Suppose now what I am talking to you is direct way. I am telling you this, that. Suppose this you convey to your mother. That teacher was telling like that. So that is indirect speech या reported speech. Indirect speech के दो नाम हैं, reported speech या indirect speech. और direct speech म्हणजे direct जिस व्यक्ति से अपनी बात हो रही है आमने सामने उसको direct speech बोलते हैं. और किसी व्यक्ति का अपन मैसेज कन्वे करते हैं या आप जो भी बताते हैं उस व्यक्ति ने ऐसा कहा तो वो होता है इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच. सी देर आर टू वेज ऑफ टेलिंग समबडी व्हाट गोपी सेड. गोपी सेड आई एम टायर्ड. गोपी ने बोला कि मैं थका हुआ हूँ, ये डायरेक्ट स्पीच हो गया. गोपी सेड दैट ही वॉज टायर्ड. गोपी ने बोला था कि वो थक गया है, तो दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच. In A, we have repeated Gopi's actual word. गोपी ने बोला मैं थक गया हूँ. गोपी बोले कि वो थक गया है, तो ऐसा रहता है. कभी कभी डायरेक्ट स्पीच भी अपन दूसरों को कन्वे करते समय डायरेक्ट स्पीच में भी बात कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर डायरेक्ट स्पीच होता है आमने सामने बात करने के लिए, और कन्वे करने के लिए होता है इनडायरेक्ट स्पीच. In A, we have repeated Gopi's actual word. This is direct speech. Note the inverted commas. In B, we have not repeated Gopi's words. We have only given the meaning of what he said. This is called reported or indirect speech. You have noticed the following changes in the reported statement. The reported words were introduced by that. The that can be omitted. Gopi said that he was tired. The inverted commas are removed. The verb am has become was. I am tired, he was tired. I pronoun has become he. Okay, these are the changes you have to notice while changing from direct to report. जैसे change the voice active से passive किया था ना, वैसे direct speech से indirect या indirect से direct करना पड़ेगा आपको. तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों. इसको आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और बहुत इसके वीडियो को बार बार सुनना पड़ेगा या फिर बुक में से बार बार पढ़ना पड़ेगा. जो भी आपको अनुकूल लगे आप कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है. यू मे हैव नोटिस द फॉलोइंग चेंजेस इन द रिपोर्टेड स्पीच. शैल आई रिपीट? द रिपोर्टेड वर्ड्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय दैट. द दैट कैन बी ओमिटेड. The inverted commas are removed. The verb am has become was and pronoun I has become he. Here are detailed notes on the changes that should be made when we turn direct speech into reported speech. Direct speech को reported speech बनाना है तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी. वो बातों पे मैं स्ट्रेस दे रही हूँ, तो आप कृपया उसको आराम से सुनिए और इसको आपके दिमाग में बिठाइए. When the reporting verb, the verb said in the example above is the past tense. The tenses of the verb in direct speech usually changes as follows. He said Annie looks sad. He said Annie looked sad. उसने बोला एनी दुखी दिख रही है. उसने बोला एनी आज दुखी है. Looked sad. The present continuous changes am to the past continuous. Direct. He said I am writing to my uncle. He said that he was writing to his uncle. Am का was हो जाता है. The present perfect changes to the past. Direct. She said I have finished the work. Reported speech. She said she had finished the work. The simple past changes to past perfect stays the same.
They went for a picnic, Ramesh said to me. Ramesh told me that नहीं आता. Ramesh told me they had gone for a picnic. रिपोर्टेड स्पीच में ऐसा होगा. सिंपल past tense changes to past perfect tense. Ramesh told me they had gone to picnic. The will, can, may form changes to would, could, might forms. Will, can, may. will का past tense would होता है, can का past tense could होता है, may का past tense might होता है. ये चीज़ें आपको एक्जुलरी वर्ब में भी बताया था, आपको बहुत ध्यान रखना है. विल, कैन, मे एक्जुलरी फॉर्म ऑफ वर्ब्स है, तो उनका पास्ट टेंस फॉर्म क्या होगा. विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट. जैसे ये सब एग्जाम्पल्स ध्यान दीजिए, आपको समझ में आएगा. द बॉय सेड माई मदर विल बी बैक सून. द बॉय सेड दैट हिज फादर वुड बी बैक सून. हाँ सॉरी, फादर ही था. फादर बोलो मदर बोलो डजेंट मेक डिफरेंस, लेकिन विल का वुड होना बहुत ज़रूरी है. विल का वुड होना रिपोर्टेड स्पीच में. द बॉय सेड माई मदर विल बी बैक सून. द बॉय सेड हिज मदर वुड बी बैक सून. डायरेक्ट, ही मे पास द एग्जाम, उषा सेड टू अस. उषा टोल्ड अस ही माइट पास द एग्जाम. मे का माइट. The past continuous and past perfect stays the same. When the reporting verb is in the present tense, the tenses do not change. He says, I am feeling ill. He says he is feeling ill. She has just said, I have finished the work. She has just said, she has finished the work. Have का has हो जाएगा, because she is singular and work is plural. The pronouns change according to the context or situation. Study the examples. I will phone you at 5, he said to me. He told me that he would phone me at 5. Reported speech. Again, direct speech. I will phone you at 5, she said to him. Reported speech. She told him that she would, she told him she would phone him at 5. He का him हो गया. She told him she would phone him at 5. Direct speech. I will phone you at 5, I said to her. Reported speech. I told her I would phone her